Wishing you all very happy new year. Today is the first day of 2025 and I really wish from the bottom of my heart that जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए and may you get what you really want in life, right? To help you get what you want in life, I want to help you to align your energies. So आज मैं आपको कुछ rituals बताऊंगा, कुछ processes बताऊंगा जो आप use कर सकते हैं to be in alignment with the positive energy of 2025, right? The first process is to remove the negative, right? Because कुछ positive पाने से पहले क्या करना चाहिए? We need to remove the negative. So simple ritual is today wash your hands with a little salt and a little coffee. दोनों को मिक्स करके क्वांटिटी डज नॉट मैटर, 1 चम्मच सॉल्ट, हाफ स्पून कॉफ़ी लेके इसको हाथों से पूरा रगड़ के आप साफ कीजिए विद द इंटेंशन कि जितनी भी मेरी नेगेटिविटी है सारी निकल जाए, राइट? वॉश योर हैंड्स विद सिंपल वाटर, नो प्रॉब्लम, यूज सोप इफ यू वांट टू डू. सेकेंड प्रोसेस इज टू, इसके बाद क्या करना है? सेकेंड प्रोसेस, एक सेकेंड स्टेप यू कैन से कि आपको अपनी पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करना है, राइट? सो वॉट यू कैन डू इज, सेकेंड स्टेप इज सिनेमन होता है, दालचीनी, अगर पाउडर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो यू कैन जस्ट यूज स्टिक्स, उसको पाउडर कर लीजिएगा. सिनेमन, थोड़ी सी शुगर एंड थोड़ा सा हनी, राइट? इसको लेके अगेन आपने हाथ वॉश करने हैं विद द इंटेंशन दैट आई एम अट्रैक्टिंग मोर पॉजिटिविटी, राइट? So first is to remove, second is to attract positivity. May 2025 become the best fabulous year of my life. And जो भी आपकी wishes हैं, please rub your hands and just infuse the positive energy in your hands, then you wash it off, right? That's the second. A third process is you want to align yourself with the energy of money, manifestations of wealth, prosperity, jo bhi hai. If you have a plain paper like this, right, you can use that as well. अगर आपके पास bay leaf है, right? Bay leaf is तेज पत्ता, सूखा तेज पत्ता, उस पे आप कोई भी एक, 2-3 जो भी आपके विश हैं, चाहे आप मल्टीपल तेज पत्ता भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दैट एज वेल. सो उस पर अपनी विश लिख के जस्ट बर्न इट, एंड व्हेन इट्स बर्निंग, राइट, मे बी गो आउट इन द balcony and do it, and make sure that it's a fireproof container so that you don't get hurt, and make sure कि जो इसके ashes हैं, you just spread it in the air, और बाहर जाके या फिर कोई हाउस प्लांट है, कोई भी प्लांट है आपका, बिकॉज इट्स पॉजिटिव, राइट, उसको जो एशेज है उनको आप प्लांट में बरी कर सकते हैं विद द इंटेंशन एंड ग्रैटिट्यूड दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी अचीव माई डिजायर्स, राइट? सो दैट्स द थर्ड स्टेप टू अलाइन योर एनर्जीज. Fourth step is to make sure that the house energy is also positive. So you can use some agarbatti today. Just move around the house, making sure that you are, letting this agarbatti smoke go in each and every corner of the house, and just say that I'm removing all the negative vibrations from this house and I'm aligning myself with the positive energy only for helping me achieve my goals in 2025. After the negative energy of the house is cleared, what do? You do the fifth and final step, which is to harmonize and bring in more positive energy. उसके लिए cinnamon ritual is very good. What you do is घर के बाहर खड़े हो जाइएगा अपने फ्लैट के बाहर, right? If you own the entire building, you can do it at the main gate and also on your own flat, right? If you have multiple floors, right, you can do it on every floor, does not matter. Use your common sense, whatever makes sense to you, you can do that. But what you can do is अपने हाथ में ये रख के, cinnamon stick लेके, for example cinnamon powder लेके, let me just do it for a little, थोड़ा सा जैसे मैंने powder लिया, right? And then I will stand in front of my entrance with the intention that as I blow this cinnamon into my house, more opportunities, prosperity, good health, abundance comes with it in my life in 2025. And ये cinnamon ritual आप डेली तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ कर सकते हैं. इट विल रियली हेल्प यू. एंड देन व्हाट यू डू इज यू blow it off inside the house, towards the house, right? Similarly, you can have multiple, थोड़ा थोड़ा देके आप हर एक रूम में कर सकते हैं. रूम के बाहर खड़े होके आपने अंदर की तरफ ब्लो करना है, so that the cinnamon should go inside the property, right? Inside the house. This is an amazing way to harmonize the energy and bring in the energy of money, success, and abundance. Uske baad, sixth is an optional step, right?
you can just light a little diya or a candle in your mandir with the intention and just thank the universe, God, जिनको भी आप believe करते हैं, gurus, to bless you and your house with positive energy, right? And this is the way to start your new year 2025 on a very, very positive energy note. You can do any of the steps, does not matter कि सारे ही करने हैं आपको. If you can do everything, 1, 2, 3, 4, 5, 6, you can do that as well. So it's all a matter of your convenience. जो भी आपको लगता है, you can do that, right? I understand some people would be traveling and you might not have all the ingredients. So do it whenever you come back into your, home. If you are traveling, at least आपके पास नमक और कॉफ़ी तो मिल ही जाएगा आपको. At least make sure that you clean your own negative energy, right? This is the simple ritual that you can do. And नमक and कॉफ़ी से रोज़ अगर आपको negativity effect होने की problem आ रही है, every day if you do the cleansing of salt and coffee, right, with your hands, wash your hands with salt and coffee, बहुत हद तक आपकी जो negativity की problems है वो भी निकल जाती है, right? So this is a little golden tip for you to help you harmonize the energy of 2025 on a very positive note. And that's about it. I really wish that you follow the techniques, the processes. I call these spiritual hacks to make our lives easier and make 2025 the best year of your life, right? Wishing you and your family a very, very happy new year. Bye-bye.